that liquid drop model, right? So we already have started, and we have seen that how that volume energy term and surface energy term came. Now we'll discuss about that Coulomb energy term. So you know that Coulomb energy basically inside that nucleus, proton-proton repulsion is decreasing that binding energy. Okay. So after deriving first two terms, nuclear physicists they observed that binding energy, whatever they are getting from that theoretical value, actually it is larger than the experimental results. Then they further came to that term because of course if that charge particle is there, there should be some repulsion because they are similar charge. So of course it leads to the decrement in the binding energy. Okay, so let us assume suppose you have a sphere, its radius is capital R, and let us assume that charge enclosed in this sphere is q, small q. एक स्फीयर एज्यूम करते हैं, न्यूक्लियस भी स्फीयर की तरह है, उसका रेडियस कितना माना कैपिटल आर, एंड लेट अस एज्यूम चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर small q. So you people know that electric field inside sphere is how much, ei will be how much. So you people know that from that basic EMT theory, that will be qr divided by 4 pi epsilon naught r cube. So I'm looking that electric field some inside some point and distance from some point, and distance from the origin of this point is smaller. So that nature of electric field will be like that. You people know from that basic theory of electricity, when that r is less than the radius of this sphere, and the electric field outside of sphere will be how much? It will be simply q by 4 pi epsilon naught R square. Very good, r square. So this is the nature of electric field we have here for uniformly charged sphere. So inside is somewhere we have like proportional to r, and outside inversely proportional to r square. Okay. So this is when r is greater than radius of sphere. Now that you know that electrical energy, or you can say that electrostatic energy due to this charge configuration, for continuous charge configuration, इस टर्म हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे और इसको कूलॉम एनर्जी भी बोलते हैं. इसको हम अभी फॉर्मूला लिखेंगे. जैम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे भी जैम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा प्लीज वहाँ पे क्लियर कर लेना, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और कूलॉम एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है EC, दैट विल बी minus epsilon naught by 2, minus I have taken because it is basically decreasing that binding energy of your system. Then you have formula that integration all space E square d tau. Okay, E square d tau. Okay, so here is the electric field, d tau is the volume element. So d tau basically volume element. In spherical polar coordinate, that volume element is how much? R square sine theta dr d theta d phi. And you know that range that r can be from 0 to infinity. ठीक है, तो ये आपका डी टाउ क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है ना. ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का. So इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज्ड टू कॉल कूलॉम एनर्जी आल्सो, एंड दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, ऑल स्पेस मतलब इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो आपका ओरिजिन से लेके, स्फीयर का ओरिजिन से लेके इन्फिनिटी तक हमको लेना पड़ेगा. ऑल स्पेस का मतलब यही है, 0 टू इन्फिनिटी. ओके, और डी टाउ आपका वॉल्यूम एलिमेंट है. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कितना होता है? r स्क्वायर sin थीटा dr d theta d phi. So if you write it, I'll write here. So basically what you will get basically epsilon naught by 2. Now you see this limit is from 0 to infinity, but you see that nature of electric field is changing, or you can say that behavior of nature of electric field is same for 0 to r. After that its nature is getting changed. So what you can say, we have to break that limit. That limit is from 0 to infinity, so you have to break that limit, and that limit will be 0 to capital R ei square d tau plus r to infinity eo square d tau.
Is it clear? Is it Yes, okay? sir. Yes, sir. Okay. Now if you substitute that EI and UO that you know, so it will be basically EC will be simply epsilon naught by 2. Now let us integrate that d tau, or let us write that d tau. So here that integration limit is for I can write here also. So that 0 to capital R, EI is how much? That is QR divided by 4 pi epsilon naught RQ, right? And of course there is whole square. Then d tau is how much? R square sin theta dr d theta d phi. तो मैंने डी टाउ के जगह पे ये लिख दिया है ना, ठीक है। और फिर आपका क्या है दूसरा टर्म में क्या हो जाएगा आपका 0 टू सॉरी r टू इंफिनिटी एंड eo इज हाउ मच q by 4 pi epsilon naught r square, then it's whole square, then you have r square sin theta dr d theta d phi. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, now can you simplify it? So you see that sin theta d theta, that theta is varying from what, from here to here. Theta will be 0 to pi. 0 to pi. Very good. Phi will be 0 to 2 pi. हाँ, जैम का स्टूडेंट का किसी का प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो ना। इसका जो वेरिएशन है कितना होता है 0 टू, और इसका रेंज जो है 0 टू 2 पाई तक होता है ना। Sir, यस sir, I want to ask one thing that हाँ EI हाँ यस R less than R. You यस have taken solid sphere formula rho R upon 3 epsilon naught. एग्जैक्टली Okay, sir. Thank you, sir. same thing. If you QR by 4 pi epsilon naught RQ, if you write it in terms of Yes, same. yeah, same thing will get rho R by 3 epsilon naught exactly. Because I have not written, because I have, at the end I have to simplify also. That's why I have written this form. It's easy for this case. So then you will get EC. Now आपका देखो इस पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो साइन थीटा डी थीटा का जो आपका है और थीटा पार्ट का हम कर लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 to pi sin theta d theta, and you have of course that d phi, that limit will be from 0 to 2 pi. इसका अगर ए करोगे इंटीग्रेशन करोगे कितना मिलेगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस हाँ एग्जैक्टली cos theta, and its limit is 0 to from 0 to pi, and if you integrate that d phi, its integration will be phi, and of course that limit will be from 0 to 2 pi. Okay, so minus cos theta है ना, तो cos phi का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, -1 you have +1, then you have -1. If you substitute that lower range or lower limit, you will get another +1. So at the end this will give you +2, and this will give you that phi component will give you 2 pi. So at the end you will get that result, that is 4 pi. So directly I will write this term sin theta d theta d phi is 4 pi. Okay, so for both integration sin theta d theta d phi will be 4 pi. So I will bring it, or I will take common. So if you take common, तो अगर उसको कॉमन लोगे तो फिर क्या मिलेगा? EC will be how much? Simply x minus epsilon naught by 2. Of course, if you take 4 pi common, and also you see q by 4 pi epsilon naught is common from both terms. So what I'll take common? 4 pi you already have from both terms, and also you have that common factor q by 4 pi epsilon naught square. Is it clear? Then you'll have so inside that bracket you will have what factor? 1 by r cube. If you take whole square of this, it will be 1 by r to the power 6. Then you will have r to the power 4 dr, and that limit is from 0 to r. Then second will be r to infinity dr by r square. Okay, so this will be, this is power is how much? 4. So after integration it will be r to the power 5 by 5. So if you substitute that capital upper limit, it will give you capital R to the power 5 by 5.
and this term will provide you simply after solving this term, that will provide you simply 1 by capital R. So if you solve this this integration, you will get simply how much you will get. Anyone? So 6 by 5 into R. Yes, sir. It will get, you will get 6 by 5 into R. किसी को कोई डाउट है इसमें? जस्ट इसका ये करो, इसका इंटीग्रेशन करो, r to the power 5 by 5 लिमिट बैठाओ, so upper limit will give you some value, that is capital R to the power 5 by 5. You have r to the power 6, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 1 by r into 1 by 5, और यहाँ पे क्या है -1 by r हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. -1 by r का a जो है, जो लोअर लिमिट है, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा +1 by r, and it will provide you 0. So basically if you solve it, you will get 6 by 5 into r. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now you see 4 pi epsilon naught in numerator, in denominator 4 by epsilon naught square. So if you basically solve it, you'll get -1 by 2. Then you'll have q square by 4 pi epsilon naught. Is it okay? Then you'll have 6 by 5r. Is it clear? Yes, sir. Good. So now you see, you will have -1 by 4 pi epsilon naught. Then क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 by 5 into Q कितना है हमारा न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है? ZE. Exactly. So it will be ZE square divided by R, and R is basically what? Radius. So radius is how much? R naught a की power 1 by 3. Okay. So you see this, these are constant. 1 by 4 by epsilon naught, 3 by 5 electronic charge are not. These are constant. So after combine, you will get minus AC. AC is the Coulomb coefficient into Z square by a की power 1 by 3. And I already told you that minus sign is representing that Coulomb force, basically decreasing that binding energy. Is it clear? इसको कोई doubt Yes, है? sir. Now I'll come. So in few books they used to write that Coulomb energy term is like that. In few books that Alok was saying, that they used to write in place of Z square, they used to write Z into Z minus 1. That I'll discuss. So in few books they used to write like that. In few books they used to write that Coulomb energy is nothing but AC into Z into Z minus 1 divided by a की power 1 by 3. Okay, so the concept behind this is like, suppose you know that Coulomb energy, or you can say that Coulomb energy or electrostatic energy is proportional to Q1 into Q2. Okay, now suppose you have nucleus, so you have Z number of protons are there. So Coulomb energy of a single proton will be how much? Coulomb energy for a single proton will be how much? It will be the charge of this proton, that will be on E, into Q2 will be how much? Q2 will be sum over all other protons. So that will be how much? Z minus 1 into E. Yes, sir. Okay. Now Coulomb energy of whole nucleus will be how much? So sum over all charges. So it will be basically how much? So it will be proportional to, now we have एक nucleons or एक protons के लिए कितना है? 1e into Z minus 1e. So there are how many protons are there? Z protons are there. So Z. for whole nucleus it will be ZE into Z minus 1e. So you can say that EC is proportional to Z into Z minus 1. Is it clear? So both I told you that how it came. Is it clear? Yes, sir. Shall I erase? सर 1 मिनट Yes. सर 1 मिनट बाद इरेज कर देना प्लीज. Yes. आप बता देना जब आपका हो जाएगा. Sir, can you please explain that EC is directly proportional to Q1, Q2 and the next part?
Yeah, you know that. Yes, yes. See, now I am looking that Coulomb energy for a single proton. So the charge of proton will be how much? 1 into E, because the charge of proton is nothing but electronic charge. That then Q2 will be how much? Q2 will be the rest of the proton. So there are total proton is how much? Z number of protons are there. You already have selected one. So remaining protons are how many protons are there? Z minus 1, right? Z minus 1. So for single proton, it will be like that. But now you have how many protons are there? Total Z. So for total nucleus, you have to substitute ZD. So it's done. You can erase. Yes, okay. Okay, now I'll come to that next term, that is asymmetric term. Okay. So fourth term is asymmetric term. So it is basically denoted by E of A, E subscript A. So you see that concept is behind is that, so if you see that stability curve of nucleus or isotope, stability curve of nuclei, ठीक है. तो इसमें देखोगे अगर स्टेबिलिटी कर्व अगर देखोगे जो स्टेबल न्यूक्लियाई है और स्टेबल आइसोटोप है उसका नेचर देखोगे, अगर प्लॉट करोगे उसका कर्व को. So let us take along y-axis you have number of neutron and that is denoted by capital N. Along x-axis that is number of proton and it is denoted by Z. So if you that stability that stable isotopes follow that curve and its nature is like. So this is suppose you have this is your N equals to Z line. And that solid line actually the stability curve. Solid line is basically stability curve, and that so that stable isotopes follow that N equals to Z line up to calcium 2040. But after that, when you are increasing further mass number, then although that proton number is increasing, but the increment of neutron number is large as compared to proton number. So that stable isotopes follow this solid curve. So up to calcium low mass, up to calcium 2040, it exactly followed that N equals to Z line. But after that, the increment of number of neutron is large as compared to number of proton. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल N for neutron. हाँ, yes, N yes. for neutron. N Yes, for sir. neutron और Z is for proton. तो जैसे जैसे आपका कोई भी आइसोटोप लोगे तो अप टू क्या है 2040 कैल्शियम, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है. बट जैसे आप बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाएगा, है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको, लेट अस टेक एग्जांपल लेड 82207. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? दिस इज स्टेबल आइसोटोप. 82. इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 125, right? Right? 207 minus 2 125. तो इसमें देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इससे ज्यादा है ना. तो एक समवेयर हियर इट लाई, राइट. सो जो आपका हेवी मास है उसमें देखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज लार्ज एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्यों होता है उसका रीजन मैं बताता हूँ. जैसे सपोज मान लो आप मास नंबर बढ़ा रहे हो, सपोज लेट अस एज्यूम, मास नंबर बढ़ाने से आपका क्या बढ़ता है? प्रोटॉन नंबर बढ़ता है. अगर इस केस में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 125 ना होके नंबर ऑफ प्रोटॉन 125 हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 82 हो गया, तो इस केस में क्या होता कि सिस्टम का कूलम्ब एनर्जी ज्यादा हो जाता है ना. और कूलम्ब एनर्जी इज रिपल्सिव इन नेचर, so that will actually make the system unstable. So if you increase that proton, I mean that is hypothetical case and that is not natural. अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना होता तो फिर क्या होता, सिस्टम क्या हो जाता, कूलम्ब एनर्जी बढ़ जाता सिस्टम का, है ना. कूलम्ब एनर्जी
विल इंक्रीज। अगर कूलम्ब एनर्जी इंक्रीज होता तो फिर सिस्टम को क्या करता, अनस्टेबल हो जाता, दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल, राइट। बट न्यूट्रॉन नंबर बढ़ने से क्या हुआ है, इफ दैट न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज होने से क्या फायदा हुआ है, इस सिस्टम का न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता गया है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पार्टिकल दे कैन इंटरैक्ट by the exchange of pi meson. So if the number of neutron is increasing, it is basically contributing to increase that nuclear force, and that force basically increasing that binding energy. That's why your system is stable, है ना। जैसे जैसे आपका न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टम का न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे कूलम्ब फोर्स नहीं है। if the Coulomb force is there is no Coulomb force and there is a nuclear force, and nuclear force is basically increasing that binding energy. That's why this system is stable. Okay, it's a creativity of nature, right? So for heavy mass, you will always observe that stable nucleus will follow this kind of curve, where number of neutrons will be large as compared to the number of protons, and that clear example is laid. Is it clear? अब प्रॉब्लम ये तो ऑफ कोर्स द सिस्टम को इंक्रीज कर रहा है, बट number of protons and number of neutrons are different. So there is a asymmetry between number of protons and number of neutrons. Sir, Yes, sir, due to increase in protons, Coulomb energy is increasing, na? exactly. And this contributes to instability. हाँ नहीं, yes, that what I'm saying. अगर if suppose you have let us take hypothetical case, if that number of proton is now 125 and number of neutron is 82. If number Yes, of proton is 125, then it will happen, it will contribute more Coulomb energy, and if it is contributing more Coulomb energy, that will make the system unstable. But this system is stable because its number of neutron is large as compared to number of proton, and number of neutron actually basically increasing that nuclear force, and nuclear force is attractive in nature, and that is basically increasing that binding energy of that system. That's why this heavy mass also stable. You can take any example, gold 79 on 97. Okay, any example, if you see for heavy mass, the stable isotope will have large neutron as compared to protons. But there is asymmetry between number of neutron and proton, and that leads to the decrement of binding energy. That I'll tell. Let us take draw on picture, it will be clear. Okay, so although it's making that system stable, but there is a asymmetry in the number between number of proton and number of neutron. यहाँ पे number of proton, number of neutron different है, इसके लिए there is asymmetry, right? So that leads to decrement in the binding energy. I'll show on graph, it will be clear to you. So let us take a small mass number, okay, and let us take a mass number 12, okay. So two nuclei I am taking, one is X, suppose I am taking 5, 12, another I am taking Y, 6, 12. So both are isobar, and their proton number is different. So proton numbers for this case, or number of proton and number of neutron for this case is same, but for this case number of protons and number of neutrons is not same, right? Not same. ओके तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, चलिए प्रोटॉन्स ऑल आर फर्मियंस, राइट। प्रोटॉन क्या होता है, फर्मियंस है, क्योंकि वो स्पिन हाफ है। न्यूट्रॉन्स भी क्या है, स्पिन हाफ है, so they are also fermions, and their I mean their occupancy, if you see their configuration, they will fill in a cell, ठीक है। तो इसका जो फिलिंग होता है सेल में होता है, that will discuss in cell model also. So let us take this side your neutron filling and this side your proton filling. तो स्पिन हाफ है, तो ऑफकोर्स एक स्टेट में कितना रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं ना। इसका कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है यहाँ पे आपका 7 है। सो इन फर्स्ट लोअर स्टेट इनका फिलिंग ऐसा होगा, है ना, फिर आपका नेक्स्ट स्टेट चला जाएगा। सो दे ऑलवेज फिल इन ए सेल, ओके। सो 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, 2 प्रोटॉन भी फिल होगा यहाँ पे, है ना। So they will fill separately, neutron will fill separately, proton will fill separately. That I will discuss in cell model also. तो कितना हो गया, 2 न्यूट्रॉन हो गया, 2 प्रोटॉन हो गया, फिर इस स्टेट में आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोटॉन्स 2 हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया, 4 हो गया, प्रोटॉन्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट में आ जाओ, यहाँ पे भी 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब प्रोटॉन्स कितना बचा है, 1 ही बचा है
है ना? Okay, then Yes, sir. yes. In next state what will happen? There will be another neutrons, right? So this is your filling. Sir, साथ ही थे ना? न्यूट्रॉन 7 है तो 2 4 6 7, प्रोटॉन 5 है, 2 4 5. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसका Yes, भी फिलिंग सेकंड केस में भी फिलिंग इस तरह से होगा. यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन्स का फिलिंग, इधर आपका प्रोटॉन्स का फिलिंग. So two neutrons will be here, two protons will be here in the ground state. Then next excited state it will be filling like this. Then next state it will be filling like this. So since they have number of protons and number of neutrons are 6, तो यहाँ पे इस तरह से filling होगा, है ना? So they always fill separately. See, neutrons are filling separately, protons are filling separately. That will come in Fermi gas model and cell model also, and protons also filling. But see, in this configuration, see, एक न्यूट्रॉन्स एक प्रोटॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है ना? इसमें देखो सारे पेयर्ड है. तो अनपेयर्ड अगर है तो इसको रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, नहीं? अगर if Yes, the nucleons is unpaired, of course you have to give less energy to remove this nucleons. So here you have two nucleons, they are unpaired, so you have to give less energy to remove them. But for this case, you see all the nucleons are paired, so you have to give much energy. Is not it? So you see there is a asymmetry between number of protons and number of neutrons, that basically decreasing the binding energy of the system. Is it clear what I am saying? Is it clear or Yes, sir. not? Yes, sir. Okay. Sir. Yes. Sir, nucleus also, neutrons also filled by pairs. Neutrons. Sir. Yes, neutrons are filled by pair. Why it's pair? Because you see, its spin is how much? Half, right? So in a single Yes. state, how many neutrons can stay? 2 into s plus 1, and that will give V2. Okay, sir. Yes. And sir, one thing, sir, how increase in neutrons leads to increase in binding energy? Yeah, exactly. See, that's why I'm saying. Suppose मान लो आपके पास neutrons ज्यादा है, तो neutrons क्या करेगा? Either protons के साथ क्या करेगा? Interact करेगा, and that is strong interaction. Or it Yes, can sir. interact to neutrons also. Neutrons. तो जितना आपका न्यूट्रॉन्स होगा उतना आपका क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एंड दैट विल बेसिकली इंक्रीज दैट बाइंडिंग एनर्जी. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. So that's why your system is stable, because of number of neutrons is large. Okay. So now that asymmetric energy denoted by E of A, E subscript A, is proportional to number of excess neutrons. Okay, so number of excess neutrons will be how much? Suppose you have n number of neutrons are there in a nucleus, and z number of protons are there, and you know that A equals to how much? N plus z. So number of excess neutrons means n minus z. Okay, so n minus z. Okay, so also you can write, since n is nothing but A minus z, right? From this equation you can say n is how much? A minus z. So what you can say, that E of A or asymmetric energy will be A minus 2z. Okay, so this is your first observation. Also it is observed that that asymmetric energy is proportional to fractional volume occupied by excess neutrons. Okay, now you see, you have, suppose you have on nucleus, its volume is V. Okay, volume is V, and that will be how much? 4 by 3 pi r naught cube A. This is the total volume of your nucleus. Yes, sir. Okay, now see what you can say, that A minus A number of nucleons
A number of nucleons will have volume how much? 4/3 pi r naught cube A, right? So on nucleons will have volume how much? So 4/3 pi r naught nucleus cube. we have a number of nucleons, so it has volume how much? 4/3 pi r naught cube A. So एक न्यूक्लियन का कितना हो जाएगा आपका? सिंपली 4/3 pi r naught cube. ओके, अब A minus 2Z न्यूक्लियन का कितना हो जाएगा वॉल्यूम? It will be how much? It will be how much? So it will be simply 4/3 pi r naught cube into A minus 2Z. 2Z. Exactly, right? So let us assume this volume will be how much? Let us assume V prime. Okay. So fractional volume will be how much? Fractional volume means what? V prime by V. Exactly. So V prime, you know, that is how much? 4/3 pi r naught cube A minus 2Z. Okay. सर थोड़ा सा बोर्ड से बाहर हो रहा है सर. बाहर हो रहा है? ओके, कोई नहीं, चलो. So V prime by V will be how much? So this will be 4/3 pi r naught cube. Then you will have A minus 2Z, right? Sorry, is there any doubt? Any problem? No, sir. No, sir. No, right? Divide by V, right? V is how much? 4/3 pi r naught cube A, right? So this will be gone, cancelled. So basically V prime by V will be how much? A minus 2Z by A. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you got one equation is this E of A is proportional to A minus 2Z, and second equation you have that is proportional to A minus 2Z by A. Okay. So if you combine these two equations, what you can write? If you combine these two equations, right? If you see that Coulomb's law, A proportional to Q1, Q2, A proportional to inversely proportional to R square. So after combination, how you used to write Q1, Q2 into R divided by R square. Symmetric energy is equal to A minus 2Z whole So it will be how much? E of A will be some constant, that is, let us take that coefficient A of A, then you will have A minus 2Z whole square divided by A. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now I'll Minus sign comes here. yes, minus, you see that that's what that whole discussion. Minus sign basically what does it mean? That asymmetric energy basically decreasing that binding energy of system of nucleus. Sir, A minus 2Z to the power square कैसा आया सर? हाँ, जैसे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप Coulomb's law कैसे लिखते हो, एनी लॉ A proportional to Q1 Q2, एक ऑब्जर्वेशन A है, दूसरा ऑब्जर्वेशन कैसे है F 1 by R square. तो इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखते हो? तो टोटल फोर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करते हो ना दोनों को. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. That's it. Oh, Just okay. Sir, yes. sir, we already take the volumetric term. So why we again take the fractional volume? That is total volume, na? Where fractional volume is that that fractional volume that is basically occupying by excess neutrons. तो जितना number of excess neutron होगा उतना उसका fractional volume ज़्यादा होगा, and that basically that will decrease that much of binding energy. तो जितना ज़्यादा आपका ये होगा volume होगा उतना ही ज़्यादा binding energy को decrease करेगा, और वो depend करेगा number of excess neutrons के ऊपर. Okay. Shall I erase? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now last term. तो चार टर्म डिराइव करने के बाद क्या नोटिस किया गया है कि जो आपका ऑड नंबर ऑफ जिसका मास ऑड नंबर है जिस न्यूक्लियस का,
उसका जो थ्योरी से 4 टर्म से जो मिल रहा है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है। बट जो इवन मास नंबर है, जैसे ऑड ऑड केस से या इवन इवन केस से, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, 4 टर्म में वो नहीं मिल रहा है। फिर फर्दर अब ये किया गया है, रिसर्च किया गया है और ये बोला गया है कि जो पेयरिंग है, सपोज मान लो आपका, सो लास्ट टर्म क्या है, पेयरिंग है। तो आपका सपोज मान लो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो प्रॉब्लम कहाँ देखा गया है कि जो 4 टर्म में जो मिल रहा है, अगर वो इवन इवन केस है तो क्या है, वो 4 टर्म जो दे रहा है वो एक्सपेरिमेंट से कम है बाइंडिंग एनर्जी। और अगर ऐसा सिचुएशन है, ऑड इवन है या इवन ऑड है, ऑड इवन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन p से डिनोट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन को n से डिनोट कर रहे हो। अगर आपका इवन ऑड केस है और ऑड ऑड केस है, ये सारे पॉसिबिलिटी है, तो आपका जो 4 टर्म्स है इसके लिए परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑड इवन मतलब इनका सम क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना, यानी ऑड मास नंबर। और इवन ऑड इसके लिए परफेक्टली मैच कर रहे हैं 4 टर्म्स से। बट इसमें प्रॉब्लम दिखा जा रहा है इवन इवन केस में और ऑड ऑड केस में, 4 टर्म से जो मिल रहे हैं वो डिफरेंट है। फिर ये बोला गया है, क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लिया गया है। सपोज मान लो आपका इवन इवन केस है, तो इवन इवन केस में आपका सारे जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या होगा, आपको सारे पेयरिंग में होगा। आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, तो सारे जो न्यूट्रॉन्स है सारे पेयरिंग में रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, पेयरिंग में रहेगा, है ना। तो सपोज मान लो एक सिचुएशन आपका सारे पेयरिंग है और एक केस आप सपोज मान लो ऑड इवन का केस लो, तो वहां पे एटलीस्ट ऑन न्यूक्लियन के अनपेयर्ड रहेगा। तो अगर इवन इवन केस है, इसके साथ आप इसका कंपेयर नहीं कर सकते, ऑफकोर्स इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सारे जो न्यूक्लियॉन्स है पेयर्ड है, यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो ये परफेक्टली मैच दे रहा है, ठीक है, बट इसके लिए तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, पेयर्ड है। तो इसको आपको एक को रिमूव करने के लिए आपको क्या है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स फॉर इवन इवन केस यू विल हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू ऑड इवन केस, है ना। तो ऑड इवन में मिल रहा है, उसको रेफरेंस लिया गया है, फिर इसमें ऐड किया गया है एक पेयरिंग टर्म को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे जो न्यूक्लियस है सारे पेयर्ड है, तो ऑफकोर्स इट विल हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज पेयरिंग से एक न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए और सारे न्यूक्लियस पेयर्ड है। So of course you have to add some number. So for even case you have to add number. And odd case में क्या है, एटलीस्ट आपका एक प्रोटॉन क्या होगा, अनपेयर्ड रहेगा, और एक आपका न्यूट्रॉन भी अनपेयर्ड रहेगा, है ना। तो इसका एक ऑड इवन केस में क्या है, एक न्यूक्लियन क्या है, अनपेयर्ड है, इसमें क्या है, दो अनपेयर्ड है, तो इसका एनर्जी ऑफ कोर्स इससे कम होगा, है ना। तो इसीलिए इसमें एक टर्म को क्या किया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Yes, sir. तो जो पेयरिंग टर्म है, फाइनल टर्म आपका है, बेसिकली इसका नोटेशन भूल गया मैं लिखना, ई ऑफ पी से लिखते हैं इसको। तो ई ऑफ पी बेसिकली क्या हो जाएगा, और बेसिकली आई थिंक आई हैव गिवन दैट नोटेशन डेल्टा, राइट? लेट अस टेक दैट नोटेशन सर। So delta will be 0 for what? Odd even case or even odd case. इसका मतलब क्या है कि मास नंबर क्या है आपका, ऑड है, ठीक है। सो डेल्टा विल बी माइनस AP डिवाइड बाई A की पावर 3/4, ओके। दिस इज फॉर ऑड केस। फॉर ऑड केस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, A इवन हो जाएगा, A मास नंबर, और डेल्टा शुड बी पॉजिटिव AP डिवाइड बाई A की पावर 3/4 फॉर व्हाट केस, इवन केस, ठीक है। इवन केस यहाँ पे भी आपका A क्या है, इवन हो जाएगा। ओके
तो फाइनल आपका जो ये है फॉर्मूला है वो लिख देता, चला इरेज। Wait a minute. एक मिनट। Yes, sir, you can. Okay, so final binding energy, now you got the total binding energy of a nucleus will be how much, that you already have written, that will be V dot E will be AVA, then you will have surface term A sec power 2/3, then you will have AC Z square divided by A ki power 1/3. Here you can write power also, AC Z into Z minus 1 divided by A ki power 1/3. Then you will have fourth term, asymmetric term, that is A minus 2Z whole square divided by A. And last term is delta, that we have discussed. So delta can be what? It can be 0 or what A. It can be minus or minus AP divided by A ki power 3/4. Or odd odd case, and it will be AP divided by A ki power 3/4 for even case. Okay. So now we'll solve few problem, then we'll go to that mass parabola formula. Okay, that is really interesting. Okay, so please write that problem. Let shall I proceed for problem? Yes, sir. Please write that problem. Sorry, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ड्रॉबैक्स। हाँ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, आइसो स्पिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, मैजिक नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना, तो बहुत सारे ड्रॉबैक है। उनका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके में एनर्जी क्यों रिलीज होता है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस फ्रॉम ए आइसोबैरिक फैमिली दैट आल्सो कैन प्रेडिक्ट. Okay, is it clear what I'm saying? Shall I proceed for problem? Yes, sir. Please write that problem. First problem is let E subscript S denotes the contribution of the, Sir, repeat करना एक मिनट. yes, let ES denotes the contribution of the surface energy per nucleon, surface energy per nucleon. Then calculate, full stop, then calculate ES aluminium 27 into that ratio you have to calculate, ES zinc 64, and that atomic number also I am writing here 13. You have, this is your 13. So let ES denotes that contribution of the surface energy per nucleon, then you have to calculate that number. Can you be able to solve? Yes, sir. So how will solve? 8 to the power 2/3 proportionality. Now you see, problem is there. Here ES denotes surface energy per nucleon. So whatever you saw ES, that was proportional to A ki power 2/3. But here they have given per nucleon. What does it mean? You have to divide by A. Is it clear what I am saying? From this definition, you can clearly say surface energy of total nucleus is how much? That is proportional to A ki power 2/3. But in that notation, they have said that ES denotes contribution of surface energy per nucleon. Per nucleon means you have to divide by mass number.
So at the end you will get that ES inversely proportional to a to the power 1/3. 4/3. Very good. Okay. So now for if you see that ES of aluminium divided by ES of zinc will be how much? The mass number of zinc, that is how much? 64 divided by 27 e power 1/3, and that is nothing but 4/3. किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. Okay, it's a very simple problem, but you have to keep in mind what they are asking actually. Okay, shall I proceed for the next problem? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please write that problem. The difference in the Coulomb energy, between the mirror nuclei, and that mirror nuclei is given here, chromium 2449 and manganese 2549. So they are basically mirror nuclei. Their protons and neutrons number interchange. So difference in the Coulomb energy between the mirror nuclei, chromium and manganese, is 6 MeV, 6 mega electron volt. Okay, full stop. Assuming that the nuclei have spherical charge distribution, and given that E square by 4 pi epsilon naught is approximately on mega electron volt femtometer. Full stop. 1 Calculate mega electron volt. femtometer. Approximately के बाद क्या था? On mega electron volt femtometer, on MeV FM. Okay. Full stop. Calculate the radius of manganese 49. Can you be able to solve? Calculate the Radius of manganese nucleus, manganese 2549. So both will have same radius, right? Is there any confusion for that? No, sir. Because they have same mass number. So you can calculate it. Can you be able to solve? Shall I proceed for solution? So just one. Yes. When you are comfortable, just inform me. Okay. Let's start. Yes, sir. Done. Done. Shall I proceed? Okay. Yes, Now sir. you see that Coulomb energy term, EC was how much? Minus 1 by 4 pi epsilon naught. Right. Then you have 3 by 5 Z square E square by R. Okay. Is it clear? So let us Yes, sir. assume for chromium it is EC on, and that is basically minus 1 by 4 pi epsilon naught into 3 by 5. Let us take that atomic number is Z on, that is given Z on square E square by R, and let us assume this is your equation number 1. Okay. So for manganese, let us denote that Coulomb energy EC2, and that will be simply कितना हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon हो जाएगा, फिर आपका 3 by 5 फैक्टर है, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर को हम Z2 से डिनोट करते हैं स्क्वायर बाय R. Let us take this is your equation number 2.
ओके ठीक है, अब 2 सब्ट्रैक्ट करो. Equation number 1 4.9 is into 10 EC raised to 49. power minus 15. how much 49 4.9 into 10 raised to power minus 15. Great, very good, very good. So if you subtract on minus 2, if you do like this, so how much you will get? EC on minus EC2, right? EC on minus EC2, and that will be how much in the side? बोलिए जरा कितना हो जाएगा? ये आपका बेसिकली सिंपली कितना हो जाएगा आपका 1 by 4 pi epsilon naught to 3 by 5. 3 by 5. Very good. Then 25 square minus 24 square okay. equals to. So let us take E square common. No? Okay. Yes, sir. You will have this Z2 square is nothing but 225 square, right? Minus 24 square है. दिख रहा है बाहर चला गया? दिख रहा है दिख रहा है, सर. Yes, sir. Good. तो फिर आपका ये EC on EC2 तो गिवन है आपका, है ना? और E square by 4 pi epsilon naught कितना बोला है? On MeV femtometer. So everything they have given. Oh, I upon forgot. RB होगा ना sir. Exactly. That we have to calculate actually. Okay. Okay. So if you solve it, it will be basically E square by 4 pi epsilon naught. Okay. Then you will have 3 by 5 is nothing but 0.6, right? Not it. 0.6. Yes, sir. 25 square minus 24 square, that will be 49. exactly 49. And that EC on minus EC2, that is how much basically given, that 6 is mega electron volt. 6 mega electron volt. So 6 MeV. Okay. And E square by 4 pi epsilon naught is given as on MeV femtometer, right? Then you have 0.6, then you will have 49 divided by 6 MeV. Now MeV unit will be gone, so आपका unit क्या मिलेगा? Only femtometer. And if you solve this number, basically you will get 4.9 femtometer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so far so good. So we can proceed for next problem, right? Is not it? Time है? Yes, sir. या नहीं? We Yes, can do sir. one problem at least, right? Okay, let us do one problem. Okay. Okay, please write that problem. Of the nuclei of mass number capital A equals to 125, full stop. Sir, Binding energy is calculated from liquid drop model. सर क्या बोला आपने? मैं एक्चुअली वो शुरू से मेंशन करूं? यस सर. Of the nuclei of mass number capital A equals to 125, full stop, the binding energy is calculated from liquid drop model, and that expression they have provided you. The binding energy that they have denoted B equals to AVA, then AS A की power 2 by 3, then you will have third term, that is AC Z minus 1 divided by A की power 1 by 3, then you will have last term A minus 2Z square divided by A, that they have given in the question. Okay, so in net they used to provide that because some confusion always is there. Okay, so they will provide you the binding energy expression, and also mass number is given, and also given that, please write, given that AC equals to 0.7 mega electron volt. So in net CSIR net they will exactly will ask like this problem. So they will provide AC value, I mean coefficient value also. AC they have provided this, and A of A they have provided you 22.5 mega electron volt. Okay, so binding energy expression given, coefficient given, only two coefficients are given. Then they have asked find the value of Z. Find the value of Z of most stable nucleus. Find the value of Z for most stable nucleus, not of, for most stable nucleus. So A is given, mass number is given, so you have to find the value of Z for most stable nucleus.
How will calculate? बाइंडिंग एनर्जी को z से डिफरेंशिएट कर देंगे. Exactly. You see, binding energy for a whole isomeric family, A is constant now, right? So you can see binding energy a function of Z. Okay. So for whole isomeric family, binding energy is a function of Z. And for maximum, most stable nucleus means उसका binding energy क्या हो जाएगा? Maximum होगा. और maximum के लिए हम क्या करते हैं? Maximum या minimum के लिए just differentiate करते हैं और जीरो उसका जीरो के बराबर करते हैं ना. Just for maximum minimum हम क्या करते हैं? Del B by del Z will be 0, right? Because for most stable nucleus, that binding energy will be maximum, and for maximum, that condition for maxima is del B by del Z is 0. Can you do it now? Can you do? Yes sir. So if you do it, Yes, sir. So del B by del Z, sorry. इस तरह की प्रॉब्लम आपका नेट में एक बेसिकली आते हैं हर बार, है ना. बट स्टूडेंट जानते हैं तब भी स्टूडेंट का मिस्टेक होता है ना, तो बी केयरफुल. एक क्वेश्चन आप मान सकते हो कॉमन है ना, बट क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करने जाते हैं वहाँ पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, तो बी वेरी प्रिसाइज. ओके, सो इफ यू डू इट डिफरेंशिएशन, हाउ मच यू विल गेट बेसिकली. सो फर्स्ट टू टर्म विल नॉट गिव एनीथिंग, थर्ड टर्म विल गिव यू AC and that will be 2z minus 1 divided by a की पावर 1/3. ओके, फिर फोर्थ टर्म क्या देगा आपको? फोर्थ टर्म आपको प्रोवाइड करेगा 4a of a. ओके, देन यू विल हैव a minus 2z divided by a, that will be 0, है ना. तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, है ना, इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करके देखना क्योंकि टाइम आपका ज्यादा नहीं है, आपको इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगा. मैं सॉल्व करता लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है, तो इसलिए 4a of a, then you will have AC a की पावर कितना हो जाएगा ये, a की पावर -1/3 डिवाइड बाय 8 a of a की पावर -1, then you will have, okay, I'll write here for most simplified form. So it will be 4a of a. आप लोग चेक करना, ठीक है, नहीं तो कल मैं बता दूंगा आपको. 4a of a, then you will have AC a की पावर 2/3, then you will have 8a of a, then you will have AC 2AC a to the power 2/3, 2AC a की पावर 2/3, 4a of a, AC to the a to the power 2/3, 8a 2AC a to the power 2/3. Okay, now you know that value a of a, capital A, AC, everything you know, right? So we substitute it. For a of a was how much? 22.5, right? कितना given था? 22.5, right? नहीं? Yes sir. Yes, sir. Then mass number कितना given था? 125, है ना? Then Coulomb coefficient कितना था आपका? 0.7, right? Then you will have 125 की power 2/3. Okay. So further you will have 8 times a of a is how much? 22.5. Then 2 AC is how much? 0.7 a की power 2/3. ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे approximately you will get that number. Z will be basically, Z will be approximately Yes sir, इतना आ रहा है. oh good, very good. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके देखना, एग्जैक्टली इस तरह की आपको मिलेगा फॉर्म. Z will be 4a of a, capital A into plus AC a की पावर 2/3 divided by 8 asymmetric term, then you will have 2 AC a की पावर 2/3, and if you substitute this value you will get Z approximately 52. Okay, is it clear? Yes sir. Okay, so we should stop Yes, here. sir, I'm getting Z equals to 62. 62, you are making mistake. If you have सर any doubt, लेकिन हाँ? सर जो आपने एक स्टेबिलिटी वाला बताया था उसमें बताया था ना कि n और z इक्वल होता है तो वो स्ट्रेट लाइन पे आता है, तो अगर 62 z हुआ तो न्यूट्रॉन 63 हो Oh, जाएंगे. you see, that's why I discussed, right? Because you see, n equals to z up to कहाँ तक फॉलो होगा? जस्ट मास नंबर 40 तक, उसके बाद नहीं फॉलो होगा, उसके बाद आपका डेविएट हो गया ना, n ज्यादा हो जाएगा. Okay, you please check your calculation. That's why I said ना,
This is a almost you can say this is a common question, but student used to make mistake for calculation. Be careful. Okay. So ये आपका इसका ये था एप्लीकेशन था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो आपका होल आइसोबैरिक फैमिली है उसमें से कौन मोस्ट स्टेबल है उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं. जैसे मैंगनीज 12 25 तो 25 मास नंबर बहुत सारे हो सकते हैं. सोडियम का भी हो सकता है बट वो स्टेबल नहीं है. मैंगनीज स्टेबल है ना. तो सारे लिक्विड ड्रॉप मॉडल बता सकते हैं सब चीज. ओके. So I think we should stop here if you have no question. Okay then. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir.